दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर गुड। सो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है मास्टर स्लैब कॉन्सेप्ट, राइट? सो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे जेनकिंस में ये मास्टर स्लैब कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे एंड साथ ही ये समझेंगे ये क्यों यूज होता है, हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, राइट? एंड इसी वीडियो में हम लोग लास्ट में वीडियो के एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे कैसे हाउ टू सेट अप मास्टर स्लैब कॉन्सेप्ट। एंड इसी वीडियो में हम लोग ये भी सीखेंगे कि हम लोग कैसे सेटअप करते हैं मास्टर और स्लैब नोड को, राइट? सो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। सो आपको मास्टर और स्लैब से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो हर एक कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाला है। तो गाइज चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे मेरा लिखा है जैसा, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। इन जेनकिंस द मास्टर स्लेव concept is used to distribute the workload and execute jobs on multiple machines called slaves, right? यानी कि हम लोग जो अपने यहाँ पे मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट में क्या कहता है कि लोड को क्या होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो भी वर्कलोड रहता है। ये हमारा मास्टर नोड है एंड ये मेरा स्लेव है, राइट? ये स्लेव है और ये मास्टर नोड है। स्लेव को बेसिकली हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, नौकर, राइट? सो ये हमारा स्लेव नोड है एंड ये हमारा मास्टर नोड है। तो ये बेसिकली क्या करता है, वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी कि बांट देता है, ठीक है? So, the Jenkins master is responsible for managing, scheduling jobs while the slabs are responsible for executing the actual build or deployment task. So, Jenkins master किस चीज के लिए responsible होता है guys? So, Jenkins master responsible होता है managing and scheduling job को schedule करना, while slab किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर एग्जीक्यूटिंग द एक्चुअल बिल्ड और डिप्लॉयमेंट टास्क, ठीक है? Let's consider an example to understand this concept better. Imagine you have a large software project that requires a building and testing on different platforms, right? हो सकता है ऐसा. So you can put a Jenkins master server and multiple slave machine. यानी कि हम लोग एक मास्टर नोड क्रिएट कर लेंगे और मल्टीपल क्या करेंगे, स्लेव मशीन कर लेंगे क्रिएट, इच विथ ए स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम और कॉन्फ़िगरेशन। लाइक अगर आपको एक ही प्रोजेक्ट है, आपको उसको विंडोज में भी चलाना है, आपको लिनक्स में भी चलाना है, राइट? आपको उसका डॉकर बिल्ड भी करना है, डॉकर इमेज के थ्रू आपको उसको कंटेनर के थ्रू क्रिएट करना। सो हर एक चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट? So by using the master slave concept you can distribute the workload across multiple machines, ये हम लोग देख लिए, enabling parallel execution of tasks and improving the overall performance and scalability of Jenkins setup. In summary, the master slave concept in Jenkins allow you to delegate job execution to multiple machines. It means slave, right? So with the master server coordinating and managing the process, this helps in scaling your build and test infrastructure and achieving faster and more efficient software development and deployment. So नेक्स्ट इज व्हाट आर द वर्क्स ऑफ द मास्टर नोड इन जेनकिंस। सो हम लोग देख लेते हैं अब कि ये जो मास्टर नोड है इसका क्या क्या वर्क्स रहता है, क्या क्या काम रहता है, ठीक है? सो द मास्टर नोड इन जेनकिंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द ओवरऑल जेनकिंस सिस्टम। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग the overall Jenkins system. Here are the some of the key functions performed by the Jenkins master node explained in easy and understandable language. So first is job management. So what is this? So I read this. The master node is where you create, configure एंड मैनेज जेनकिंस जॉब, जहां से आप अपने जॉब्स को क्या करते हो, मैनेज करते हो, राइट? वेयर यू क्रिएट, कॉन्फ़िगर एंड मैनेज जेनकिंस जॉब. It provides a user-friendly interface to define the build steps, triggers, and post-build action for your projects. Second is scheduling and execution. So the master node schedule and assign jobs to the available slave nodes. So master node ही decide करता है कि like आपका अगर एक साथ अगर आपने 3 जॉब को चलाना है, so कौन सी जॉब कौन से स्लेव पे चलेगा वो मास्टर नोड आपका डिसाइड करेगा, राइट? बेसिकली वही सबको असाइन करता है हर एक चीज. सो द मास्टर नोड schedules and assign jobs to the available slave nodes based on their availability and matching criteria specified in the job configuration, right? So it ensures that the jobs are executed promptly and coordinates the flow of work across the Jenkins
environment. Third is user interface and reporting. So the master node hosts the Jenkins user interface, जिसको हम लोग UI भी कहते हैं in short, that allows user to interact with Jenkins. It provides a web-based dashboard where you can view the status of jobs. जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे सो मैं आपको ये दिखाऊंगी भी, राइट. सो मॉनिटर, बिल्ड लॉग्स एंड एक्सेस वेरियस रिपोर्ट एंड मैट्रिक रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट. ये आप लोगों ने देखा भी होगा जब आप जैनकिन्स अपना इंस्टॉल करते हो ना, तो जब आप डैशबोर्ड जिसको कहते हो जैनकिन्स का डैशबोर्ड, सो वही है यूजर इंटरफेस एंड रिपोर्टिंग. सो द मास्टर नोड होस्ट एंड जैनकिन्स यूजर इंटरफेस that allow user to interact with Jenkins, and it provides a web-based dashboard, right? Where you can view the status of job, कि आपका जॉब चला नहीं चला, फेल्ड हो गया, क्या हुआ, क्या दिक्कत है, लॉग्स चेक कर सकते हो, राइट. सो ये सारी चीजें आप वहां पे कर सकते हो. Fourth is plugin and management. So Jenkins had a rich ecosystem of plugins that extend its functionality. The master node is responsible for managing these plugins. So plugins को भी कौन manage करता है? Master node करता है, including installation, configuration and updates. ठीक है. So it enables you to add new feature and integration to Jenkins without having to modify the core system. Fifth is distributed builds. So if you have multiple slave nodes, the master node coordinates the distribution of build tasks across them. So it breaks down a job into smaller units of work and assign them to different slaves, allowing for parallel execution and faster build times. Okay. So next is security and access control. So the master node handles user authentication and authorization, ensuring that only authorized user can access and perform action. So इस चीज का भी ये ध्यान रखता है. It allows managed security configuration such as SSL certificates and secure communication protocols to protect the Jenkins environment. Seventh is plugin and system configuration. So the master node allow you to configure global setting for Jenkins, right? Such as email notification, source code management system, and build environment variables. So it provides a centralized location to manage the overall configuration of your Jenkins instance. 8 is integration and extensibility. So the master node serves the central hub for integrating Jenkins with other tools and systems in your software development workflow. It supports various integration through plugins and provides APIs for interacting with Jenkins programmatically. So in simple terms, the master node is like a brain of Jenkins. मैंने ऐसा क्यों कहा या यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि इट इज अ ब्रेन ऑफ जेनकिंस, इसलिए मैंने लिखा क्योंकि ये हर एक चीज को मैनेज कौन करता है? मास्टर नोड ही करता है यहाँ पे, राइट. और अगर हम लोग अगर अपने बॉडी का एग्जांपल ले तो मेरे को कौन कंट्रोल करता है? मेरा ब्रेन ही करता है. सो मैंने यहाँ पे इसको एक एग्जांपल दे दिया है कि द मास्टर नोड इज लाइक अ ब्रेन ऑफ जेनकिंस, यानी हर कुछ मास्टर नोड करता है, इसलिए मैंने उसको कह दिया ब्रेन ऑफ जेनकिंस. इट हैंडल्स द मैनेजमेंट, coordination and control of all the build and deployment activities happening with Jenkins. So what are the works of the slave nodes? अब हम लोगों ने मास्टर नोड का तो इतना सारा कुछ पढ़ लिया, समझ लिया कि क्या क्या करता है मास्टर नोड. अब स्लेव नोड का भी थोड़ा बात कर लेते हैं. So, the slave node in Jenkins play a crucial role in executing the actual build or deployment task. So, here are the key functions performed by the Jenkins slave node explained in easy and understandable language. So, first is job execution. So, when a job is scheduled or triggered on the Jenkins master node, it delegates the execution of the job to an available slave node. Get it? So the slave node receive the instruction from the master and perform the build or deployment task specified in job configuration. So हम लोगों ने ये पहले भी जान लिया कि जो हमारा slave node होता है वो किसका सुनता है? मास्टर का सुनता है. मास्टर उसको जो बोलेगा वो कर देगा, right? So second is parallel execution. Jenkins slave nodes enable parallel execution of jobs if you have multiple slave nodes, right? So the master can distribute the workload across them, allowing multiple jobs
to be executed simultaneously. This helps in improving the overall efficiency and speed of your build process. Third is hardware operating system specific tasks, right? So the slave nodes can be configured with specific hardware or operating systems to handle tasks that require a particular environment. For example, if you need to build and test your software on different platforms, right? ये मैंने ऊपर भी बात किया था इसके बारे में. So you can set up slave node with different operating systems such as Windows, Linux or Mac OS. So handle platform specific builds, right? Fourth is scaling and build infrastructure. So by adding more slave nodes to your Jenkins setup, you can scale your build infrastructure. This allows to handle larger workloads, distribute and build tasks, and reduce the time it takes to complete builds. Slave nodes can be added or removed based on demand, providing flexibility in resource allocation. Fifth is resource specialization. So, slave node can specialize to handle specific types of tasks or configuration. For example, you can have slave nodes with more memory or processing power to handle resource intensive builds. Okay, so or you can dedicate slave nodes for tasks like code analysis or deployment to specific environments. Sixth is distributed testing. So if you have a large test suite, you can distribute the test across multiple slave nodes to execute them in parallel, right? So this helps in reducing the overall test execution time and provides faster feedback on the quality of your software. Seventh and last point is agent connectivity. So slave nodes establish a connection with the Jenkins master and wait for instruction. They regularly communicate with the master to provide updates on job status, log files, and other information related to the job execution. Right? So, in simple terms, slave node in Jenkins are like the hands that perform the actual work. यानी ब्रेन क्या है आपका? ब्रेन है आपका मास्टर नोड और हैंड है आपका स्लेव नोड, राइट? सो मैंने वही लिखा है यहाँ पे कि इन सिंपल टर्म्स स्लेव नोड इज जेनकिंस आर लाइक द हैंड दैट प्लेटफॉर्म द एक्चुअल वर्क. काम कौन कर रहा है एक्चुअल में? स्लेव नोड ही कर रहा है. सो दे एग्जीक्यूट द बिल्ड और डिप्लॉयमेंट टास्क delegated by the master node, enable parallel execution, and provide the necessary resources and specialized environments to handle specific types of tasks. So by leveraging multiple slave nodes, you can distribute the workload, scale your build infrastructure, and achieve faster and more efficient software development and testing process. So next is advantages of the master slave concept. So first is scalability. So the master slave concept allows you to scale your Jenkins infrastructure by adding multiple slave nodes, right? So this enables you to distribute the workload across multiple machines and handle large workloads without overwhelming the Jenkins master. Scalability helps improve the overall performance and responsiveness of your Jenkins environment. Second is parallel execution. So with multiple slave nodes, Jenkins can execute jobs in parallel. Each slave node can handle a separate job or a part of a job simultaneously, reducing the overall build or deployment time. Parallel execution improves productivity, enables faster feedback, and helps you deliver software more quickly. So these are the basically advantages of master slave nodes. Third is resource optimization. So by using slave nodes, you can optimize the utilization of resources in your build environment. You can assign a specific slave node with particular hardware configuration or operating systems to handle specialized tasks or environments. So this ensures that the right resources are utilized for each job, improving efficiency and reducing resource wastage. Fourth is fault tolerance.
So the master slave setup in Jenkins enhances fault tolerance. If a slave node fails or experiences issue, the master can the master can redistribute the job to another available slave. So this ensures that the build or deployment process continues uninterrupted even if individual slave nodes encounter problems. So fault tolerance help maintain the stability and reliability of your CI/CD pipeline. Fifth is flexibility and customization. So the master slave concept provides flexibility and customization option. You can configure and customize each slave node with specific labels, capabilities and configurations. So this allows you to tailor the execution environment for different types of job or tasks. So it also enables you to easily add or remove slave nodes based on your changing requirements or workloads. So in summary, the master slave concept in Jenkins offers scalability, parallel executions, resource optimization, fault tolerance, and flexibility. So by leveraging multiple slave nodes, you can handle large workloads, execute job in parallel, make efficient use of resources, maintain system stability, and customize the execution environment to meet your specific needs. So I hope this is clear to everyone, like what is master slave concept, advantages of master slave concept, what are the works of master node, what are the works of slave nodes, right? So आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो गई, दैट्स वाई मैं कल एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप जो है मास्टर स्लेव जो नोड है उसका आप सेटअप करोगे एंड कैसे आप जॉब वगैरह एग्जीक्यूट करोगे, राइट? सो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर इट एनीवेयर वेयर यू वांट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों.